Hello, am I audible now? Yeah. Uh, First of all, I must extend my heartfelt thanks to the organizing team and Professor Vivek sir, Professor Vijay sir, ma'am, and Professor Naik sir, and every one of you. You did such a wonderful job to come here in such a huge gathering. As I understand, most of you are from IIT and you are the students of technology and engineering, and still you have shown that interest to the topic which actually primarily deals with social sciences, and therefore I'm thankful to you. I express my gratitude for you having come here and being the part of this program. uh, Another important thing is Dr. Datta has put a wonderful introductory note, and Daktim sir also has put a wonderful introductory comments on the issue area. As Dr. Datta has put, reclaiming history of the tribal communities and remembering their contributions in India's freedom struggle. Why is that important? Because we have already completed 75 years of our independence, and we have been talking about inclusive growth and that the communities which have remained excluded, that if they are to be made the part of the national project, then I think everybody has to be brought in. That one aspect is there when we talk about reclaiming history. But when we talk about the tribal communities, what is that comes in our mind? If I am not from a tribal area, since me and Raktim sir and Priyashi ma'am also has remained, and most of us have remained connected with the tribal issues, and therefore we haven't tried to understand the tribal communities through books. We are trying to understand those tribal communities by uh, being one amongst them or by mingling with them and interacting with them on a day-to-day basis, understanding them as they are. But in our most of the books, the colonial discourses, and also uh, m- in movies primarily, the popular media, what is projected about tribal communities is that they are the headhunters or some wild people or beastly people clad with some sort of leaves, all the time dancing around the fire. These are the images which have been projected in our minds. That's how we understand. How many of us understand do not understand Hindi at all? Anyone of us? I'll try to make it bilingual. That would be better for me also to interact and you also to understand. All right. So ये झिंगा लाला हो, एक जो गाने हो झिंगा लाला हो वगैरह और इस प्रकार की जो गाने दिखाए जाते हैं, और हमें लगता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी ही होती है, और we never try to make an effort to go and understand as they are. So there is a very big problem when we deal with tribal communities, and that problem is image versus reality. The image which has been projected, जिस इमेज जो इमेज हमारे सामने बताई गई है और जो रियलिटी है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है. इसलिए हम रिक्लेमिंग हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो आप देखें कि हमें जालियन वाला बाग हत्याकांड के बारे में या फिर वो मसाकर के बारे में हमको पता है, वी नो अबाउट दैट. बट उससे भी बड़ा मसाकर जो है मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ है, जो भीलों के साथ किया गया था. जो गोविंद गुरु जो भीलों के जो नेता थे, वो धर्मगुरु थे, उनके नेतृत्व में वो जो लड़ाई वहां पर लड़ाई तो नहीं थी, वो एक प्रदर्शन था कि ना मानो रे ना मानो, भोरेटिया सरकार ना मानो, भोरेटिया ना मानो मतलब भोरेटिया मतलब जो गोरे लोग हैं उनका हम नहीं मानेंगे, उनका कहा हुआ नहीं मानेंगे, उनके नियमों को नहीं मानेंगे, उन्होंने जो समाज में एक डिसरप्शंस लाए हैं उन डिसरप्शंस को नहीं मानेंगे. एक इस प्रकार का जो प्रदर्शन था, वो पहाड़ी पे जा रहे थे और उन पर 4 लाख फायर्स उनके पास थे, ब्रिटिश अधिकारियों के पास 2 लाख फायर्स चलाए गए, कई लोगों को मारा गया. उनमें से एक जो महिला थी, एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपने मेमोर्स में लिखा है कि when we were firing, I could see that the mother was died and baby was drinking her milk. और
वो देख करके आई फेल्ट सो इनह्यूमन अबाउट व्हाट वी वर डूइंग, एंड देन आई ऑर्डर्ड नॉट टू फायर. सो दैट इज अ सिचुएशन. वो हुआ. या फिर 1900 में जो डुमरी पहाड़ी पर जो लड़ाई हुई ब्रिटिशों के बीच में और भगवान बिरसा मुंडा और उनके साथियों के बीच में, मुंडाओं के बीच में, these were bigger massacres than the Jallianwala Bagh massacre. बट जालियनवाला बाग मसैकर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम इन दो मसैकर्स जो उसके पहले बहुत पहले हुए हैं उन मसैकर्स के बारे में नहीं जानते हैं. और दैट देयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट, आई शुड आई से, इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो इन चीजों को जानने के लिए जो है हमें एक हिस्ट्री को रिक्लेम करने की आवश्यकता है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है. दैट वन एस्पेक्ट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अनदर थिंग आई थिंक कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज की जो लड़ाइयां थी, हमको जो बताया गया है, हमें यह बताया गया है कि दिस वर ओनली फॉर द लैंड, जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, उससे आगे कुछ लड़ाई नहीं थी, ऐसा हमें बताया गया है. बट दैट वाज नॉट फॉर जस्ट जल जंगल और जमीन, दैट वाज फॉर अ ब्रॉडर नेशनहुड. और वो जो हमारी नेशनहुड की परिकल्पना के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, then generally we trace that history to 1648, when after 30 years of war the European powers came together, they signed a treaty called Treaty of Westphalia. उसके बाद में मॉडर्न नेशन स्टेट की आइडियाज आई, द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता की सारी परिकल्पनाओं की बात होती है. बट और उसके आधार पर they divided themselves into the nations, the states, and then states became nation, और वो नेशन स्टेट कहने लगे. We had many states, but we were one nation all the time for a very long time, since immemorial. सनातन राष्ट्र है, हम इसलिए कहते हैं. उसके बारे में डॉक्टर दत्ता ने कहा ही है उनके इंट्रोडक्टरी रिमार्क में. इस बारे में आई वाज लिसनिंग टू प्रोफेसर पटनायक. He is well known, world renowned anthropologist, and also he heads the tribal studies chair in Delhi University. Generally क्या होता है कि we try to understand our realities through the prism of the Western narratives or Western discourses. We haven't invented our own discourses to understand our own realities. वो रिक्लेम हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं, और उनका इंट्रोडक्टरी रिमार्क और रक्तिम सर ने भी जो कहा, we will have to devise our own instruments, our own discourses, our own narratives to understand our own realities. Then only we will understand the difference between the atrocities which were perpetrated or which were suffered by the indigenous communities in North America, South America, Australia, and other parts of the world, and the tribal groups, या जनजाति जिसे कहते हैं, और कुछ लोग आदिवासी जिसे हमें कहते हैं. इसमें जो डिफरेंस है वो हमें समझ सकता है. हमारे यहां पर कोई बाहर से नहीं आया, इसलिए हम कहते हैं कि कौन आदि है, सब अनादि है, हम सब भारतवासी है, पुरखे सबके खून एक है, नगर ग्राम वनवासी है. हम सभी लोग एक ही है. और ये जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत वगैरह का इस प्रकार का जो झूठा पुलिंदा हमें जो परोसा गया बहुत लंबे समय तक, पहले तो आक्रमण कहा, उसके बाद में वो कहने लगे कि माइग्रेशन, आर्यन माइग्रेशन. But this Aryan invasion theory or Aryan migration theory has been debunked on many quarters by various scholars, archaeologists. बहुत सारे excavation से वो establish हुआ है, but still that argument is not being accepted. The argument is only being pushed forward, which is colonial powers के अपने आप को sustain करने के लिए जो आवश्यक था, वो narratives हमारे यहाँ पर रहे. ये recent history है. When the industrial revolution and then colonizing, जो enlightenment, industrial revolution और colonizing spree शुरू हुई, the European powers went and conquered North America, South America, Australia, and they massacred the local indigenous communities. और बच्चों को adopt वगैरह करके उनकी भाषाओं को, उनकी languages को, उनकी सारी cultures को खत्म कर दिया. That kind of experience we do not have here. If that has happened, that has happened to an extent by the Mughals, the Islamic rulers, when they came in, primarily by the British, because British were on the civilizing mission. वो क्या कहते थे? White man's burden. Anybody who doesn't look like white man, who like us, we are brown colored,
और उनके लिए तो काले ही थे हम, black people. They were uncivilized, and therefore they have to be civilized, because they had understood what civilization is all about, and so they wanted to civilize everybody. अब रडियार्ड किपलिंग के बारे में आपने सुना होगा, famous poet, but he is one of the pioneers who who upholds this idea of white man's burden and civilizing the Philippines people. जो if you can keep your head, उनकी जो कविता है, he's great poet, no doubt about that, but he's one of the pioneers of this idea of civilizing the uncivilized people. Anybody who is not white is uncivilized, and therefore he has to be civilized, and therefore he has to be brought into the faith that the white men follow. ये सारी प्रक्रियाओं की वजह से हुआ यूं है कि we have totally lost confidence in ourselves, in our civilizational values, and therefore हमारे भारत के इतिहास को अगर हमें समझना है, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज को अगर हम समझना है हमें, so when these Western colonizers went to Australia, North America, South America, in various parts of the world, in Africa also, they tried to understand those indigenous communities through evolutionary perspective. उसमें evolutionary perspective में evolution के स्तर पे, economic progress के स्तर पे, आज जो economic development के indicators हम जिनको मानते हैं, उनके स्तर पे ये लोग नीचे ठहरते थे, क्योंकि white man के जैसे वो उनका उतना स्टैंडर्ड नहीं था. इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्राइबल कम्युनिटीज अलग होती है. इस प्रकार से भारत में इट्स नॉट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. एंड व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? आज भी आप अगर इदू मिश्मी नाम की जो कम्युनिटी है, सर अरुणाचल प्रदेश का सर ने जिक्र किया, अरुणाचल प्रदेश में वो कम्युनिटी क्या मानती है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी वो इदू इश्मी कम्युनिटी से है, मिश्मी, इदू मिश्मी कम्युनिटी से. So Rukmini is from that community, a tribal which we regard today as a tribal community. She marries भगवान श्री कृष्ण उस समय, और वो कहते हैं कि हमारी बहन को भगा के ले गया, इसलिए उसके साथ हमारा युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हमको हराया, इसलिए वो अभी भी वो बाल थोड़ा काटे रहते हैं, वो जो साधना कट वगैरह जो होता है ना पहले वाली, उस प्रकार से. नाग कन्या उलूपी जो है उसके साथ अर्जुन का विवाह हुआ है, और माँ हिडिंबा जो माता हिडिंबा है, शी इज दिमासा प्रिंस, आई सपोज दिमासा प्रिंस, दिमासा है, दिमासा कम्युनिटी की, और उनका मंदिर कहाँ है? हिमाचल में है. एंड देन अनदर थिंग, ये जो साउथ एंड नॉर्थ वाला जो डिवाइड हुआ है, ये बताया गया है, इफ देयर वाज अ डिवाइड, व्हाई आदि शंकराचार्य इन 6th and 7th century travels all the way from Tamil Nadu and goes to Srinagar and establishes 4 mathas, east, west, north and east, north and south? If there was not oneness, then why should he travel such a long distance at the cost of his own health and life? He died very early. So the sense of oneness, we were always one nation. States were different. There were different states, but we were one nation. There was one feeling that we are bound together by certain common culture. So जब we try to reclaim our history, we will have to see ourselves through our own prism, in our own ways, in our own discourses, in our own narratives, which we will have to evolve and understand our communities in our own ways. Then only I think we would do justice to the communities which have remained neglected, which have not found enough space in our NCERT books, in our university books, in our post-graduation books, and research has never taken place with this perspective, because I was listening to Vaibhav Surangeji, one of the activists who has spent entire life working for the tribal communities. He says he interacts with one of the professors of Delhi University, and she has already written 12 books. And she wants to write one more book on northeastern tribes. And she says, how would she write? I will sit in the library, I will read another books, and then I will write the book. She hasn't understood the community itself. She's trying to understand the community through the eyes of somebody. And that has happened. And that has happened for various reasons. In the course of discussion, I think we would touch on that also. I'm sorry, I have taken some more time. Thank you. Sir, I will have to pass the mic to you.